Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shivakumarji to give us a discourse on Bhagavad Gita based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya, and thank you all for joining us today. Shri Ram Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Ram Ram to all joining this session. We are at chapter number 3, Karma Yoga, verse 3.34. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो. That verse was explained in last session also, but let me take it and then move ahead. Indriyasyendriyasyarthe. So Indriyasya arthe, our senses. Indriyasya arthe, in the sense objects. So our senses. Indriyasya arthe rag dvesho vyavasthito. So our senses are well sticked. Rag dvesho. They are favoring certain kind of sense objects. They are liking certain kind of sense objects because they are having attachment with them. So which is well suited to us, which is giving us pleasure. On the basis of pleasure we are measuring, not on the basis of its necessity for our survival. So on the basis of obsession, on the basis of pleasure, we are favoring certain kinds of sense objects. So we want good food, we want good sound, and there are the various things which want to satiate our ego and desire. So on the basis, because it gives us pleasure. So indriyasya arthe, our senses are interacting with the sense objects on the basis of rag and dvesh, that is attachment and aversion. So with certain sense objects they are also aversion. If somebody is condemning us, so that we do not like, because it is somewhere hampering our ego, so we do not like it. And there are the certain things which are happening around us which we dislike, so we are having aversion, so we are having dvesh with it. So हमारी इंद्रियां अपने उद्दीपकों के प्रति, जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, कुछ परिस्थितियां वे उद्दीपक हैं, वे हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, तो उनके प्रति राग और द्वेष के कारण या तो उनसे जुड़ी हुई हैं, वे कुछ उद्दीपकों को, कुछ सांसारिक सुविधाओं को, परिस्थितियों की चाहत करती हैं और कुछ को अपने से दूर रखना चाहती हैं. तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो. तयोः न वशमागच्छेत्. So we should never vasham agachet. We should never be controlled by them. Tayoh asya paripanthino, because these are enemy. So these are harmful for its path, its spiritual path. So the senses, our senses should be controlled by our mind, and later on with the superior, that is, it should be controlled with our intellect also. So it should not be based on the happiness, or that means on the pleasure of our body. So this Lord Krishna is telling, हमारी इंद्रियों को इन इंद्रियों के अर्थों के प्रति, सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति, उनके उद्दीपकों के प्रति जो आकर्षण है वो राग और द्वेष के कारण है. हमें इनके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए या प्रतिकर्षित नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये आध्यात्मिक पथ में हमारे बाधक हैं. These are paripanthinos. So these are enemy in the spiritual path. So Lord Krishna is here counseling Arjuna not to get affected by these sense objects. So we should not take them as a goal, that these are our goal, because we ourselves are ephemeral. So what can we say about the happiness attained by them? That is also having a life of bubble like, and also they are not eternal. So we should not fall prey of these things. The literal meaning is that attraction and repulsion are ordained with regard to object of all the organs. So these are ordained with regard to objects. So certain objects we are having attraction, and with certain objects we are having aversion. One should not come under the sway of these two, because these are her adversaries. So both things will ultimately lead us to adversary. So we should not fall prey of these material objects. We should not lead our life based on the preferences of these material objects. Although Sri Krishna previously emphasized that mind and senses are propelled by the natural tendencies, our mind and senses, they are having a tendency to travel outside us. Our mind also is not stable. It is moving here, there, and it cannot stay on one material object. When that desire is satiated, then it switches over to other. So mind, though superior to our senses, but it prefers to be slave of these senses. So in our cases, it is slave. Whatever our senses desire, mind follows it, and in any way manipulates it to fulfill those desires. So mind is like that. It hardly travels inside. But those who are saints, who are having the higher level of consciousness, their minds is traveling inside. Their intellect is also traveling inside. उनकी मानसिक चेतना और बौद्धिक चेतना, जो ऊंचे स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो अंतर्मुखी है. जबकि एक साधारण मनुष्य की मानसिक चेतना उसकी इंद्रियों की चेरी होती है, गुलाम होती है. जो इंद्रियां चाहती हैं उनको वो पूरा करने में लग जाती है, और हमारे समय को, जो कितना कीमती शरीर है, उसको व्यर्थ ही गंवा देती हैं. इस छोटे से जीवन काल को बाहर की यात्रा में गंवा देती हैं. दैट श्री कृष्णा इज एम्फसाइजिंग टू अर्जुन. That he now opens up the possibility of harnessing them. As long as we have the material body, its maintenance, we have to utilize the object of senses. There were two friends, and at 10 o'clock night, there is one example for it, that one friend is having a certain kind of uh, attachment to gulab jamun, while other friend was free and not having such kind of attachment. So first friend said, I have to take gulab jamun before I have to go to sleep. Both were in hostel. So that student came out from hostel and roamed here and there, that which shop is open, which is not open, and ultimately at 12 o'clock, so that person has got the gulab jamun. He was satisfied, came back. Both have slept. In morning, the other student has asked that when you slept at night. So I have slept at midnight, 12 o'clock. So he has said that the desire was generated by you, and for that desire, you were roaming. So you were roaming for 2 hours. 2 hours you are in unease. After that, you came to same state which was at 10 o'clock. So better not to arise such desires. तो दो मित्र थे, तो दूसरे मित्र ने कहा, तुम्हारे ही मन में ये रसगुल्ले खाने की इच्छा 10 बजे जागृत हुई,
यदि तुमने ये इच्छा न की होती तो तुम भी 10 बजे से ही मेरी तरह आत्मन्यवात्मना तुष्टा होते और आराम से सो रहे होते। सो हमारे द्वारा ही ये इच्छाएं जागृत की जाती हैं, फिर हम उनको पाने के लिए तड़पते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं। ऐसा हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए करते हैं, और अहंकार भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये हमको दुख देता है। जब जब भी कोई हम पर चोट करता है तो हमारे अहंकार को, हमारे खुद के बनाए हुए किले को चोट लगती है, और इससे हम क्रुद्ध होते हैं, और क्रुद्ध होने के बाद फिर दुखी भी होते हैं। सो सच आर द फोर्ट्रेस वी हैव मेड and our soul is concealed within it. We cannot explore ourselves. We have deliberately closed the doors of our consciousness. If we are in a spiritual path, then better to avoid our attractions or affections to these object of senses and lead our life by internal voyage. We should not externally search ourselves, because whatever we are, it is from inside. Shri Krishna is not asking to stop consuming what is necessary. That is me. It does not mean that we should renounce the things, the material object, but we should not pursue it for these things. We should not chase for these things. We should not waste our time uh, for these. We should what is necessary, but to practice eradicating attachment and aversion. So we should not fall prey of these. Because definitely the sanskar do have a deep rooted influence on all living beings, but if we practice the method taught in Bhagavad Gita, we can succeed in correcting the situations. Because here we should know the order of superiority, that is indriyani paranyahu indriyebhya paramana manasastu parabuddhe yobuddhe partastu sa. So indriyani paranyahu, our senses are superior than our body. Where our senses leads us, our body goes to that direction. If our eyes want to see good thing, then eyes have a power or capacity to carry our body. Our body runs toward that where there are good things. It moves towards the cinema or something else which is good. In the similar manner, our taste buds, where it leads us, our body go. That what does it mean? That our senses are more powerful than our body. Indriyani parani ahu. So from our ahu, that is body, indriyani parani, our senses are superior. Indriyebhya paramana, and the man, our mental consciousness is superior than senses. So senses are superior than body, but our mental consciousness, our mind is superior than our senses. That if mind is upset, then we do not like these golgappe and this. We will calmly sit on one side because some our near and dear might have died, so we are upset. We are gloomy. Or if our mind is well proliferated, very happy, then also we do not care for these small things. So mind is superior. Mind can control. At that time, we even do not worry about how the fan is running. If we are gloomy, whether it is running or not, what is the regulator number of the fan, we do not worry. What is the temperature of AC, nothing, for nothing we worry, because mind is always superior. So at mental state, we forget the happiness of senses. So mental happiness superior than sensual happiness. In the similar manner, Indriyebhya paramana manasastu parabuddhe, and our intellect is superior than our mind. Intellect is superior. Those who are doctors, those who are laureates at higher positions, they do not be enslaved by their minds. Like Lata Mangeshkar has never taken Golgappe, because intellect is superior, so well controlled. So their intellect, that is intellectual consciousness, has now opened. So at that time, they are not falling prey of their mind. Doctors, they do not take the street food.
They know that this is harmful. They do not lead to sensual happiness. They go what is good for body, what is not good for body. In the similar manner, our intellect is superior than our mind. And Indriyebhya param manah manasastu parabuddhe yo buddhe partasusa. And that is from intellect, our Atman is superior. So if we are leading the life of Atman, if is well enlightened, if the mud mired around it has been decayed, so it is eradicated at that time. We are Indriyani, Indriyebhya. We are now santusht with our Atmanyevatmana tushta. So we are now satiated with our Atman only. We are satisfied with soul only. Nothing is required for that. Even we do not require any connection with the external world. So the person who is Atmanyevatmana tushta seems nothing. So such is the superiority or the order of the consciousness. So as we go in, macroscopic to microscopic world. So which is more microscopic is more superior. Atman is more microscopic, so superior. And which is macroscopic is inferior. Here the Lord Krishna is elaborating the things in a very majestic manner. Now, the senses naturally run towards the sense objects and the mutual interaction. When we are using our senses to sense objects, then these mutually interact. जब हमारी इंद्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर अपने उद्दीपकों के प्रति, जो भी उनके उद्दीपक हैं, जैसे जीभ को अच्छा आहार चाहिए, आंखों को सुंदर दृश्य चाहिए, कानों को मधुर ध्वनि चाहिए, इसी तरीके से हमारी त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए, ऐसे ही नासिका को अच्छी गंध चाहिए। वे अपने उद्दीपकों के प्रति बर्ताव करती हैं, बरतती हैं। तो ऐसी स्थिति में सो व्हेन दीज interact with, so due to mutual interaction it creates a sensation of pleasure and pain. तो कभी कभी हमको इससे सुख की अनुभूति भी होती है और दुख की अनुभूति भी होती है। जहां जहां से हमको सुख मिलता है, इंद्रियों को सुख मिलता है, उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और उसको राग कहते हैं। सो वेयर वी गेट प्लेजर, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और जहां जहां से हमको इस बरतने के साथ साथ हमको दुख मिलता है, उनके प्रति हमको द्वेष होता है, हम उन्हें फिर से नहीं चाहते, एंड दैट इज कॉल्ड द्वेष। सो हम राग, इंद्रियां राग द्वेष में बरतती हैं और यही राग द्वेष मन के स्तर तक पहुंच जाता है और फिर मन उन चीजों को, इंद्रियों को दिलाने की चेष्टा करता है जिनसे उनको आनंद प्राप्त हुआ है। यद्यपि इससे हमारे शरीर का दुरुपयोग होता है, इंद्रियों का दुरुपयोग होता है, ऊर्जा का भी बहुत क्षय होता है, वरना यही ऊर्जा अंतर्मुखी करके हम ईश्वर के ध्यान में लगा सकते थे, और वही हम घंटों बाहर भटकते रहते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं कि किन किन प्रकार से हमारे जीवन में इंद्रियों के इस आनंद की पूर्ति की जा सके जो कि क्षणभंगुर है। सो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि हमें बरतना तो चाहिए। लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग दैट वी शुड प्रॉपरली यूटिलाइज व्हाट एवर इज बेस्टोर्ड बाय मी टू यू। हम ईश्वर के, जो हमारा विकास का अधिष्ठाता है, उसके द्वारा जो जो भी चीजें हमको वरदानित हैं, उनका हमको बरतना तो चाहिए, लेकिन उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। न उनके अत्यधिक संचय करने को लस्ट कहते हैं, बहुत अधिक संचय कर लिया तो उसको लालच कहते हैं, उसको भी हमें नहीं करना। आनंद के लिए जीने को हम लस्ट कहते हैं। वी शुड नॉट गो फॉर इट इज वेस्टिंग आवर प्रेशियस लाइफ फॉर mere happiness. For example, the taste bud experience the joy in contact with delicious food and distress in bitter food. The mind repeatedly contemplates the sensation of pleasure and pain, and mind repeats that what kind of sensation we have now experienced while tasting those things, while experiencing those things. So that contemplation again inclines us to go and chase for those objects again and again, and this is total wastage. It associates with these objects
thoughts of pleasure of sense objects create attachment, while thoughts of pain creates aversion. Sri Krishna tells Arjun to succumb neither of feeling of attachment nor aversion. So we should uplift ourselves. We should have a broader outlook, and we should not fall prey of these. In the discharge of our worldly duty, we have to encounter all kinds of likable and unlikable situations. So we should prefer what are our swadharma is there, worldly duties is there, what is our duty to our society, to our family, that we should perform. So we are leading a married life, and our Swamiji also said, whatever duties are given to you, you should discharge it properly and without having any your own goal. हमारे खुद के लक्ष्य नहीं होने चाहिए कि हमें ये बनना है, हमें अपने बच्चे को ये बनाना है. सो जहां जहां भगवान हमको ले जाए, जैसे जैसे ले जाए, चलते चले जाना चाहिए. अपने खुद के संकल्प और विकल्प नहीं होने चाहिए. हमको भगवान का दास होकर ही इस संसार में जीना चाहिए. जैसे एक नौकर के खुद के संकल्प और विकल्प नहीं होते और मालिक को ही लाभ या हानि होती है, नौकर को उससे कोई लेना देना नहीं होता. वो मालिक को खुश करने में ही लगा रहता है. उससे ना उसके मन में क्षोभ होता है और ना ही उसके मन में हर्ष होता है कि जो भी है वो बस अपना मालिक को खुश करने के चक्कर में रहता है. तो ये सारी दुनिया मालिक का पसारा है, हमारे भगवान का पसारा है. हमें उसे प्रसन्न करना है. हमारे अपने संकल्प और विकल्प होंगे तो हमारा भगवान के प्रति समर्पण कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब वे विकल्प और संकल्प पूरे नहीं होंगे, जिनको हम चाहते हैं वो संकल्प हैं और जिनको नहीं चाहते विकल्प हैं, तो उनके प्रति अगर हम ऐसा करेंगे तो सोचेंगे हमारा काम नहीं किया. तो फिर ऐसे में हमारा ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पण टूटता है. तो जिस व्यक्ति में संकल्प और विकल्प नहीं होते, वो भगवान के प्रति विशुद्ध समर्पण कर पाता है. तो निजी विकल्पों और संकल्पों का कोई अर्थ नहीं है, अपनी पंचवर्षीय योजना का कोई अर्थ नहीं है. जब हमारी जीवन बुलबुला मात्र है, तो ऐसे में अपने विकल्प और संकल्प बनाकर क्या करना है, जितना प्रभु के नजदीक हो सके वही ठीक रहेगा. So we must practice neither to yearn for these likeable situation nor to avoid the unlikable situation. When we stop being slaves of both likes and dislikes of our mind and senses, then we become indifferent to both pleasure and pain in discharge of our duties. So when we are not having our own determination, our own likings, at that time we discharge our duties with more perfections, because our own interest does not lie with it. So we should uh, discharge our duties with this. Otherwise we want to fulfill our desires and having lacking during discharge of duties. And we may go to higher level of consciousness. So next verse is श्रेयान स्वधर्मो विगुणः स्वपरधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह श्रेयान स्वधर्मो विगुणः. So that is next verse 3.35. It is better to do your own duties where you are kept. What is the current situation? You should accept it cheerfully, and accepting we should not compare ourselves. Shreyan swadharmo viguna pardharmat suanushtitat. And if we switch over to somebody else, that we are thinking that person is doing better, let us not perform our own duties which we should perform, or we should not execute our duties and switch over to that, because there more money is there, more popularity is there. If we do this, then it is not good for us. Neither it is spiritually or not worldly. Like Arjuna was saying that he will renunciate all these things and go to become a monk somewhere else. But was it good? Because Arjuna was having a responsibility of lot of citizens
For them, he was fighting a righteous war. So, if the Arjuna is not performing, discharging the duties, then who will perform? Will some monk or pandit will come to perform? So, wherever we are kept, we are part and parcel of this society, and we are discharging our duties, and this society becomes complete due to that. So, if everybody want to do the only opting the good job, whatever is of higher quality, then who will discharge the duties are left over? So whatever duties are given to us, it is as per our current situation, whatever syllabus you are given. Like a fifth class student is thinking that there are good pictures in the third class, so we should solve the question paper of third class. So he is asking in the examination hall, ma'am, give me third class paper. Third standard paper is very good, there are aam, anar, apples are made, so we want that figurative paper. This fifth class is not uh, I do not like it. And in the similar manner, some other student may opt for some other class. So it is not in a greater vision, it is a shorter vision of us. We want the short term benefit, but it will not benefit us and stagnate our path of evolution. So, where we are, whatever questions are given, it is given by our master of evolution, and wisely it was given. So we should be very curious, very cautious, and with full energy. We should, with full energy and zeal, we should discharge our duty. If we are executing our duties, then that situation will never come to us. Whatever exam we are passing, whatever questions we are completing successfully, those are not given to us. And if we are running from that situation, that will come again and again, because our Lord is knowing that our sons and daughters have to pass this hurdle to ultimately evolve from the situation. So we have to get evolved. Those lessons we have learned in our earlier lives, what is the need to lead that simpler life? More tougher situations will come. You may see that in the normal person who are not leading to spiritual life, they are living happily. हम ये देखते हैं कि जो साधारण व्यक्ति हैं, जो भगवान के बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, उनके जीवन में बड़ा आनंद है। लेकिन हमारे साधक भाई बहन हैं, तो उनके जीवन में किसी का कभी पुत्र का अंत हो जा रहा है, तो किसी के जीवन में बहुत गहरी समस्या आ जा रही है, किसी की अचानक डेथ हो जा रही है। तो जब हम ऊंचे पथ पर चलते हैं, तो एमए के प्रश्न पत्र में हमें और कठिन प्रश्न मिलेंगे। तो ये हमें और अच्छा और गहरा बनाने के लिए आवश्यक है। इसी को गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग कहा गया है, कि भगवान स्वामी जी भी कहते हैं कि वह विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे। सो दैट इज whatever is the situations comes to us, drastic situation, and it ultimately makes us to take u-turn towards God, then that is credible. So ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अर्जुन के जीवन में भी आई। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं कायरता पूर्ण दोष से अपहृत स्वभाव हुए स्वभाव वाला आपके चरणों में हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो आप मेरे लिए करें। तो भगवान ने उसको गीता का उपदेश दिया। इन द सिमिलर मैनर वॉट एवर सिचुएशन कम्स अस, वी शुड एम्ब्रेस इट, वी शुड एक्सेप्ट इट, एंड रैपिडली वी शुड मूव टुवर्ड्स पाथ। क्योंकि भगवान ने समता का बहुपाठ पढ़ाकर निज जीवन कल्याण किया है। प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, ममतावश कल्याण किया है। सो इसलिए प्रतिकूल कृपा भी आती है तो उसे माथे टेकना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। नाउ लेट मी रिसाइट अ भजन। श्री राम
न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुत लोक किस काम के। गर्मी शिशिर जल हिमाचल जगत में, प्रभु योग से योनि लाखों बिताए। पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए। जिए फल मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली जब, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए। विषय मोह ममता में मन को रमा के, चले हो विमुख तब हरि नाम के। न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुत लोक किस काम के। गतिमान सतत लीला सुख दुख की, गुण अवगुण के नित संघर्ष। जीवन मृत्यु के दुष्कर अभिनय, हार जीत विप्लव उत्कर्ष। दलन दमन युग दुख युद्ध संधि के, राज महल में रमण के लिया। प्रीत प्रतीत व कल्पित सम्मुख, झरे खिले फूलों की कलियां। द कंट्रास्टिंग सिचुएशंस those are mentioned by our Mathura Prasad ji was totally taken extracted from आध्यात्मिक विकास। स्वामी जी बुक इज आध्यात्मिक विकास। ये आध्यात्मिक विकास की वही पंक्तियां यहाँ ले ली गई हैं कि हमारे जीवन में जीवन होता है, मृत्यु होती है, हार जीत होता है, उत्कर्ष भी होता है, गिरावट भी होती है, विप्लव भी होता है, उत्कर्ष भी होता है, दलन होता है, दमन होता है, दुख होता है, युद्ध युद्ध और संधि भी होती है, और राजमहल में रमण केलियां बज रही होती हैं। प्रीत प्रतीत व कल्पित, जो हम सोचते हैं और जो सम्मुख जो हमारे सामने हैं, झरे खिले फूलों की कलियां। जीवन में उतार और चढ़ाव ये बिल्कुल आगम अपाइनो अनित्य हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, लेकिन ये आते ही रहेंगे। अनुचित उचित भयंकर कोमल, देखो सब में योग राम के। न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुख लोक किस काम के। लगी लो पतंगे की दीपक शिखा से, लपट के समाया परम चेतना में। पावक शिखा भी लपटती समाने, सदा सर्वदा रवि के ज्योतिर्घना में। जले बूंद जल की जो सागर विरह में, जो जल की बूंद है वो सागर में ही मिल जाएगी, चाहे वो कहीं यहाँ भी एक बूंद डाल दें तो वो
भाप बन के उड़ेगी, नदी में जाएगी, लेकिन उसे मिलना सागर में ही है। ऐसे ही जब माचिस की तीली जलाते हैं तो अग्नि की जो पावक शिखा है वो सूर्य की ओर उन्मुख है। वैसे ही हम परमात्म तत्व के कण हैं, हमें परमात्मा में ही मिलना है। जले बूंद जल की जो सागर, विरह में मिलन का वो कल कल कलरव मचाए। तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, कि मिलन के बिना ना पल चैन आए। मृग तृष्णा बने भागते मोह मरु में। हम इधर उधर भाग रहे हैं मृग तृष्णा की भांति, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, मिलने वाला कुछ नहीं है। मृग तृष्णा बने भागते मोह मरु में, यद्यपि पथिक तुम हरि धाम के, न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से। धरनी धाम सुत लोक किस काम के। यदि हमारा नर योनि पाकर भगवान से मिलन नहीं होता है तो धरनी धाम सुत, ये जो धरती है, धाम है, घर मिला हुआ है, सुत मिला हुआ है, ये संसार मिला हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। तुमको अच्छी किताबें दे दी जाएं, बढ़िया स्टेंसिल दे दी जाए, अच्छा बॉक्स दे दिया जाए, बस्ता खरीद के दे दिया जाए, और तुम कक्षा को पास ही न कर सको, तो माता पिता का ये सब पसारा जो तुम्हारे लिए इंतजाम है वो किस काम का रह जाएगा। ऐसा हमारे मथुरा प्रसाद जी ने कहा है। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम राम शिव कुमार, बहुत राम अच्छा राम। अच्छा था, बहुत अच्छा भजन भी बहुत अच्छा था, कुछ समझाया। राम 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 बेटा, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। दीदी चरण स्पर्श बड़ी आशीर्वाद राम 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 भैया जी, बहुत राम अच्छा राम। समझा आप। इंद्रियों पे संयम रखने का आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद बहुत बहुत। बहन राम 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 राम। राम प्रिया बहन सबको राम 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 सब राम। राम राम सबको। दीदी चरण स्पर्श। राम राम। प्रिया बहन, गीता बहन, कुसुम बहन, सबको राम राम। राम राम। मेरा भी आंटी। सबको राम राम, दीदियों को, चारों सबको दीदियों को, भैया जी को। दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद फिर दी, मिलेंगे। दीदी एक वो हमारी लता अग्रवाल थी, लता अग्रवाल, वो आज नहीं रही। पुरानी साधिका थी, हमारे शत्रुघ्न पार्क में आती थी। हाँ, वो नहीं रही, काफी समय से बीमार थी। तो डाल आप देंगे सब, अपना परिवार में। हाँ, साधना परिवार में डाल दीजिए। Thank you, Bhaiya, for the wonderful discourse and bhajan. Thank you all for joining today. Ram Ram sabko. Bye. राम 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 दीदी। राम 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 दीदी।